we're seeing a different kind of politics playing out. A big crisis, in fact. Ajit Pawar and Sharad Pawar's recent comments have sparked speculation in the Maharashtra. In fact, Republic reported on Monday how sources say that Ajit Pawar is in the talks with BJP and wants to move out of the Congress alliance. And Republic has spoken to Maharashtra minister there, who has confirmed that talks are underway, but he added that names will be declared just before Lok Sabha elections and any change will take place only early next year. महाराष्ट्र में राजनीतिक गतिविधियां बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि एनसीपी के बीच में दो गुट हो चुके हैं और अजीत पवार जो है बीजेपी के संपर्क में है। ऐसी बातें आ रही हैं। आज चंद्रशेखर बावनकुले जो आपके अध्यक्ष भी हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने ये बात कही है कि महाराष्ट्र के विपक्ष के कुछ नेता बजट सेशन तक अपने पाले में होंगे। देखो, ऐसा है कि बहुत नेता लोग विपक्ष के संपर्क में, ये बात सही है, मगर ऐसा अभी कोई परिस्थिति नहीं है और ये समय भी नहीं है कि अभी अगर वो आते हैं तो उन्हें तो त्यागपत्र देना होगा। जो भी हमारे संपर्क में है वो तो अगली लोकसभा के 2 महीने पहले ये सभी लोग देशभक्ति की भावना से, सेवा भावी वृत्ति से भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में लेंगे। और भाई साहब, जब ये लेंगे ना तब आपको अचानक से पता चलेगा, इतनी जल्दी कभी पता नहीं चलेगा। खबरें यहाँ तक भी है कि जिस प्रकार से शरद पवार साहब का स्टेटमेंट आया है, उन्होंने मोदी जी को जो है उनके समर्थन में जो है बयानात दिए, अदानी का मुद्दा हो, उसके बाद उनकी डिग्री को लेकर के, न केवल शरद पवार, अजीत पवार ने भी डिग्री को लेकर के जो है वो सामंजस्य की स्थिति उन्होंने दिखाई है। तो कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी के पैरों तले ज़मीन जो है वो खिसकती दिखाई दे रही है। देखो, ऐसा मैं नहीं कहूँगा रोज गाली देना यानी राजनीति है क्या। कभी सभी लोग जो है सही समय में सही बात के लिए अगर बाजू लेते हैं तो मुझे एक बात कांग्रेस से भी जाननी है। अदानी कब बड़े हुए? जब चिमन भाई पटेल ने उन्हें 10 पैसे मीटर से जमीन दी। अदानी कब बड़े हुए? जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री छबीरदास मेहता ने बुंद्रा पोर्ट का टेंडर निकाला। ऐसा तो नहीं है कि पहले अदानी के पास बीपीएल कार्ड था और एकदम से बीपीएल कार्ड देकर वो बड़े आदमी बन गए, ऐसा तो है ही नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 45,000 करोड़ का टेंडर उनको दिया है। ममता दीदी ने उनको बुलाकर उनके साथ बात की है। तो मुझे लगता है ऐसा कोई भ्रम फैलाना कि अदानी जी मोदी जी की वजह से बड़े हुए हैं, तो ये भ्रम है। एक सवाल यहाँ पे ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने जिस प्रकार ये टाइमिंग का जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव से 2 महीने ठीक पहले, ठीक उसी प्रकार से चंद्रशेखर बावनकुले ने भी कहा कि बजट सेशन होते होते चीज़ें बदलेंगी और महाराष्ट्र में बदलाव दिखेगा। तो ये बात तो सही है ना, क्योंकि अच्छा काम करेंगे तो ये विश्वास होता है। देखो, मेरिट के स्टूडेंट को देखिए, वो पेपर दे के आते हैं। अब रिजल्ट लगने को तो समय रहता, पर वो कहते ना हमें 99% मार्क मिलेंगे, क्योंकि अपने कर्म पर जो विश्वास होता है, आत्मविश्वास होता है, उससे ही वो विद्यार्थी कहता है ना। तो राजनीति में हमारे काम की वजह से ये विश्वास है। दादा, एक कैंडिड क्वेश्चन है आपसे। अजीत दादा के साथ साथ और कितने विधायक जो हैं आपके संपर्क में? देखो, जो लोग संपर्क में हैं उनका नाम बता के संकेत का भंग नहीं करना चाहिए। देखो, कोई अपने पे विश्वास रखता है, कोई बड़े प्रेम मोहब्बत से जब बात करता है कि देखो आत्मनिर्भर भारत के लिए, देश को विश्व का गुरु बनाने के लिए माननीय मोदी जी जान से काम करते हैं, तो हम भी उसमें अपना कोई छोटा हिस्सा देना चाहते, योगदान देना चाहते। तो आज मैं अगर नाम बता दूं तो देखो अच्छी बात नहीं होती। ऑपरेशन लोटस सक्रिय है महाराष्ट्र। देखो, ऑपरेशन डेमोक्रेसी है, ये ऑपरेशन इंडिया है कि जिसमें हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। तो मुझे लगता है कोई कमल जीते ये भाव से हम राजनीति नहीं करते। देखो, हमारी राजनीति ये सत्ता के लिए नहीं, जनता की दिल जीतने की राजनीति है। And viewers, Ajit Pawar, without naming any politician, had taken a veiled dive at an MVA leader and said that some people do not know what to say when a mic is handed to them.
तर माईक हातामध्ये आल्यानंतर काय बोलावं काय कळतच नाही. कोण फडतूस म्हणतं, कोण काढतूस म्हणतं, काय म्हणतात. अरे आपल्याला चांगले विचार यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी दिले. सुसंस्कृत महाराष्ट्राची निर्मिती संयुक्त महाराष्ट्राच्या काळामध्ये चव्हाण साहेबांनी केली. त्या रस्त्याने जाऊ द्या. वसंतदादांनी दाखवलेल्या रस्त्याने जाऊ. वसंतराव नाईकांनी दाखवलेल्या, शरदराव पवारांनी दाखवल्या त्या रस्त्याने जाऊ ना. तो रस्ता आपल्या भल्याचा आहे, आपल्याला निश्चितपणे दिशा देणार आहे. So viewers, that's a big story coming out from Maharashtra, where we are seeing that according to sources, Republic has learned that Ajit Pawar is in talks with the BJP and he wants to move out of the Congress alliance. In fact, Republic spoke to a Maharashtra minister who has confirmed that talks are underway. But he added that names will be declared just before the Lok Sabha election. So that is a big story coming out from Maharashtra, and this is going to be a top story we'll be watching out for here on Republic TV. And Union Minister Piyush Goyal on Monday, while addressing the Indian diaspora community in France, said that India will become the third largest economy by the year 2027. Here's more. I'm happy to share with you, not only did we cross the Rubicon of 750 billion, we'll be beyond 765 billion, possibly touching 770 billion as the final figures. Big vision leadership of Prime Minister Narendra Modi is making rapid strides, is ensuring that 1.4 billion Indians, young India, is ready to engage with the rest of the world, is ready to power India's growth story, is working relentlessly to give leadership to the world, whether it is the economies of the world, whether it's the field of art, culture, tradition, whether it's yoga or it's millets. Viewers, we continue to be live and breaking coming up on the other side. Financial Times yet to pull down its report despite Adani's sharp response on allegations. जूनियर वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं नीरज चोपड़ा. QS&THE, the world's foremost university rankings organizations, have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान होते हुए आज देश अपनी आंखों के सामने देख रहा है. और कभी कभी लोग कह भी रहे हैं कि हमने सोचा नहीं था कि हम जीते जी ये देख पाएंगे. ऐसा कई लोग कहते हैं और इसके दो प्रमुख कारण हैं. पहला, भारत के 130 करोड़ लोगों का आत्मविश्वास जो कहता है यस, इट इज इंडियाज मोमेंट. और दूसरा, भारत के 130 करोड़ लोगों की सोच जो कहती है नेशन फर्स्ट. Dear viewers, in a few days we are bringing to you once again the Republic Summit. And this year our theme is fittingly about how this is a time of transformation. Yes, this is a time of transformation for an India that is growing 4 times faster than the world average. It is a time of transformation for an India whose manufacturing exports grow 40% year on year on the back of COVID, while China witnesses a major loss.
This is a time of transformation, of opportunity for India that has let go of the dollar hangover, and the rupee is closer to being accepted as international currency. And nearly 60% of all digital payments are already UPI based. Isn't this the very moment to come together and think of how we can make the transformation even quicker? So please join me and join all of us at Republic TV as we bring to you the Republic Summit this year on the theme of a time of transformation. See you there. Viewers, top headlines right now ahead of Rajasthan elections. Pilot launches his most open revolt against Vadra Congress. का कल्चर रहा है, लेकिन हाँ, राजस्थान का यह विशेष परिस्थिति का निर्माण हो गया है, इसका समाधान कुछ करना चाहिए. Rahul and Priyanka seem to side with Gehlot. Miffed Vadra Congress now attacks Sachin Pilot. (1984) right investigation back to haunt Congress. Titler summoned for voice sample collection. BJP confirms turn in Maharashtra politics, says picture will be clear in January 2024. Finance Minister slams Western media, says those writing reports must visit India first. Financial Times yet to pull down its report despite Adani's sharp response on allegations. Viewers, we're live and breaking this Tuesday afternoon. I'm Shivangi Shukla, getting you the latest and a lot of developments coming in, especially from Rajasthan. It's a big and open revolt by Sachin Pilot against the Vadra Congress. The former Deputy Chief Minister of Rajasthan is on a day-long dharna in Jaipur to protest against Gehlot government's inaction on corruption. What this has turned out to be is a massive show of strength as we speak. Now, the Congress is in a panic mode after these developments. It's an open revolt. We have our correspondents on ground and they're getting us multiple reactions coming in from multiple leaders who are at the spot, including Kirori Lal and Udit Raj. किरोड़ी लाल मीना जी, आज हम देख रहे हैं सचिन पायलट सुबह से धरने पर बैठे हुए हैं अपने ही सीएम के अगेंस्ट। वो कह रहे हैं कि सीएम बात सुन नहीं रहे हैं, चिट्ठी का जवाब नहीं दे रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि करप्शन पर सीएम कार्रवाई करे, लेकिन सीएम सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और अब देखने को मिल रहा है कि डिप्टी सीएम और सीएम आमने सामने है इस पूरे मामले पर। वो तो शुरू से आमने सामने है, लेकिन 4.5 साल से कहाँ पायलट साहब सो रहे थे। 5 बजट सत्र हो गए, उसमें बोलना चाहिए था, विधानसभा के रिकॉर्ड पर आता। और जो चलो बजट सत्र गया, 18 महीने तक वो डिप्टी सीएम रहे थे, तब उनको पहल करके कार्रवाई करानी चाहिए। जब तो बड़े मधुर संबंध थे गहलोत साहब और सचिन पायलट साहब के। एक राज पर, वसुंधरा राज पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये 4.5 साल में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे सिंचाई विभाग का हो, चाहे पेयजल का हो, चाहे अडानी का हो, चाहे एम्बुलेंस घोटाला हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे बिजली का गबन हो, ढेर सारे घोटाले ही घोटाले। तो ऐसा सचिन पायलट साहब क्यों कर रहे हैं कि वसुंधरा जी पे जो बेबुनियाद आरोप लगे उनको लेकर धरने पे बैठे हैं। यहाँ तो प्रमाणित आरोप है गहलोत साहब के खिलाफ। हाउस में हमारे प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने लगाए थे अडानी के मामले को लेके, बिजली के टेंडर में गड़बड़ियाँ, जमीन अलॉटमेंट में गड़बड़ियाँ। तो उसको भी मुद्दा बना के जोड़ें तो ठीक रहेगा। वो भेदभाव क्यों कर रहे हैं कि आप बीजेपी के आरोपों को तो पुख्ता मान रहे हैं और कांग्रेस में जो गहलोत के राज में पुख्ता प्रमाण दिए गए हैं भ्रष्टाचार के,
उनकी आवाज़ नहीं उठा रहे। तो दोहरा मापदंड से आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये निशाना कहीं है, निगाहें कहीं है, ये पूरा राजनीतिक है। आपको लगता है कि मुद्दा पूरा कहीं और था? सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच शुरू से ही किसी न किसी बात पर आपसी मतभेद देखने को मिला है। अब कांग्रेस का एक तबका जहां सचिन पायलट के साथ ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है, वहीं पे तो दूसरे का सीनियर लीडर्स की बात करें, कांग्रेस आला कमान की बात करें, तो उनका कहना है कि ये सचिन पायलट खिलाफत कर रहे हैं अपनी ही पार्टी के खिलाफ। ये अंदेशा किस तरफ है? ये तो आपस में दोनों ही खिलाफत कर रहे हैं। पहले पायलट साहब ने बाड़ाबंदी की है, बाद में जब यहाँ से अपने वो कांग्रेस के कमेटी गई जिसमें खुद प्रेसिडेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, और उन्होंने जाके विधायकों की राय लेना चाहा, खड़गे साहब और अजय माकन ने, तो गहलोत साहब के बहुत नज़दीक के मंत्री शांति धारीवाल सब एमएलए को बांध के बैठ गए, उनसे इस्तीफा लिखा लिया, बसों में भर के जाके इस्तीफा दे आया। उन्होंने तो बयान भी दे दिए कि हमें पायलट को बनाए तो ये कर देंगे, ये कर देंगे। मतलब अनुशासनहीनता दोनों पक्ष कर रहे हैं, लेकिन अनुशासनहीनता पायलट की तो दिखती है, गहलोत की, शांति धारीवाल की, महेश जोशी की, ये दिल्ली वालों को नहीं दिखती। तो ये भेद भी नहीं करना चाहिए। And Badra Congress has attacked Sachin Pilot. Congress has called it a one-sided protest and called the dharna against the party. In fact, we also spoke to Udit Raj. I will appeal Sachin Pilot that this is the time to stand with Rahul Gandhi ji, stand with the party, stand against the fight of Adani corruption. This is not the right time. This is what I can solicit him. I tried to solicit him, he did not listen. Still I am soliciting that this is not the right time. And most importantly, when the opposition is standing on these issues, our own party leaders should reconsider that when others are ours, others are standing with us, why not he? The Congress has given him too much, that he should also think about it. So what happened that this is the crucial time to stand with Rahul Gandhi ji, crucial time to fight the bigger enemy, bigger corruption that has been done by Adani. One more thing. This infighting between these two senior leaders of Congress in Rajasthan, it is not the first time. We saw this last year as well, and before that also, the Sachin Pilot versus Ashok Gehlot drama every time reaches to center to Delhi, and every time High Command takes some or the other way isn't able to resolve the issue. Last time we also saw the same. Isn't Congress worried about the infighting amongst its own party leaders? I think BJP should worry more that what is happening in Karnataka. More number of BJP people have deserted and joined Congress than Congress who have deserted the party. That is not being uncovered. That is to be covered. And in Rajasthan, that the conflict or in other way I can say the way that they have sidelined Vasundhara Raje, who is a stalwart leader, who established BJP over there. Aren't they worried about it? Aren't they ventilated in Rajasthan and Karnataka? They should worry about themselves. All right, let's go straight to Amardeep, who's joining us live right now. And Amardeep is right at the site, the protest site, where we're seeing Sachin Pilot fasting against corruption and the Gehlot government. Amardeep, we are seeing that many Congress leaders are not happy with what's happening. They are hitting out at Sachin Pilot, and they're saying that this is an anti-party activity which would go against the interest of the party. That's what many Congress leaders are saying about Sachin Pilot's fast and the dharna that he's performing there.
बिल्कुल, आप यहाँ सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि सचिन पायलट जो है वो बैठे हुए हैं और करीब 1.5 से 2 घंटे का वक्त जो है वो बीत चुका है। इसके अलावा समर्थकों की यहाँ तादाद अगर बात करें तो लगातार बढ़ती जा रही है। जिस वक्त सचिन पायलट शहीद स्मारक पहुंचे थे उस वक्त उनके काफिले के पीछे यहाँ पे भीड़ जो थी वो थोड़ी कम थी, लेकिन अब अगर बात करें तो जितनी अंदर है उससे ज़्यादा बाहर की तस्वीर जो है वो है। तो यहाँ धरना स्थल पर जो मौन धारण किया है सचिन पायलट ने, अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ एक जंग छेड़ी है। वो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी की नज़रों में अब ये कहा जा रहा है कि ये धरना जो है ये पार्टी विरोधी गतिविधियों के तहत है। तो ये चीज़ सुखजिंदर रंधावा जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो कल साफ कर चुके थे, लेकिन तस्वीरें अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये मंच की तस्वीरें, मंच की तस्वीरों पे आप सचिन पायलट को देखेंगे, पीछे यहाँ पे प्रदेश पदाधिकारी भी हैं। ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट अकेले बैठे हैं, सचिन पायलट के साथ में कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं विश्वेंद्र सिंह, उनके बेटे यहाँ पे आए हुए हैं। इसके अलावा अनिल चोपड़ा यहाँ पे हैं, सुरेश शर्मा यहाँ पे हैं। इसके अलावा प्रदेश से जुड़े हुए कई जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। लगातार नारेबाजी चल रही है, सचिन पायलट के पक्ष में नारेबाजी चल रही है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं टारगेट करती हैं कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि ये जो चीज़ है सामने आप इसमें तस्वीर देखेंगे तो एक तरफ गांधी की तस्वीर है, दूसरी तरफ महात्मा ज्योतिराव फूले की तस्वीर है, क्योंकि आज उनकी जयंती भी है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ मौन धारण करके यहाँ जो अपनी राजनीति है उसको बता रहे हैं सचिन पायलट। आगे की तरफ किस तरीके का उनका रुख रहेगा ये इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ समर्थकों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं। कुछ समर्थकों से मैं भी बात करना चाहूँगा, यहाँ बात करने की कोशिश करूँगा। कहाँ से आए हैं? मैं बस्सी से, दौलत मीणा बस्सी से आए हैं। तो पायलट साहब जिस चीज़ को उठा रहे हैं ठीक है? बिल्कुल, पायलट साहब ने जो मुद्दा उठाया है वो हम पहले भी बात विधानसभा चुनाव से पहले हमने इन मुद्दों पे बात लेकिन पार्टी तो कह रही है कि पार्टी विरोधी चीजें हैं। जी नहीं, पार्टी का कोई विरोध नहीं है। ये जो पिछली भाजपा की सरकार थी उसके उस दौरान जो भी घोटाले हुए और भ्रष्टाचार हुए उसके खिलाफ जांच की मांग है। रंधावा साहब कह रहे हैं, जयराम रमेश कह रहे हैं, पवन खेड़ा कह रहे हैं कि ये पार्टी विरोधी चीजें हो रही हैं। देखिए, पार्टी में अगर सत्य के लिए कोई बात उठाई जाती है तो वो पार्टी का विरोध नहीं है। हमने पिछली और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। इकरामुद्दीन खान। पायलट साहब का धरना जो है वो कह रहे हैं, पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये तो पार्टी फोरम पे रखनी चाहिए थी बात, यहाँ पे रख रहे हैं। वसुंधरा राजे के खिलाफ धरना पार्टी विरोधी कैसे हुआ? ये धरना वसुंधरा राज सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार हुआ था उसके लिए विरुद्ध में धरना है। हवा हो गए, जयराम रमेश हो गए, पवन खेड़ा हो गए, ये तो तमाम लोग कह रहे हैं ना कि पार्टी विरोधी। उनको शायद ये पता नहीं है कि वसुंधरा राजे के खिलाफ धरना है, ये कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। क्या नाम है आपका? प्रद्युमन सिंह। प्रद्युमन जी कहाँ से आए हैं? अजमेर। आए हैं तो ये बताइए कि पार्टी फोरम पे बात करनी चाहिए थी, इस तरीके की बात कह रहे हैं बड़े नेता, आपको क्या लगता है? नहीं, ये जो पायलट साहब ने कदम उठाया है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये न्याय संगत है, वाजिब है, हम इसका समर्थन करते हैं। आप ही के पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि ये न्याय संगत नहीं है, पार्टी फोरम पे बात करनी चाहिए थी, ये तो खिलाफत है। पायलट साहब खुद एक बहुत बड़े नेता हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, वो वाजिब मुद्दा उठाते हैं, हम उनके साथ हैं, जनता उनके साथ है। एडवोकेट नासिर खान, धौलपुर से आया हूँ। पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं तो पार्टी के खिलाफ वाली कांग्रेस की विचारधारा रही है। कांग्रेस सदैव भ्रष्टाचार और बेईमानी के खिलाफ लड़ती रही है, सड़क से लेकर सदन तक। आज तक कांग्रेस का यही संघर्ष रहा है। पायलट साहब के नेतृत्व में ये लड़ाई सड़क से लेकर संघर्ष तक सदन तक रहेगी और हम उनके साथ हैं। पहले ऐसा हो चुका है, पहले गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, जब आज कैबिनेट मंत्री थे सेंटर में कटारिया जी ने आंदोलन किया था वहाँ जोटवाड़ा थाने के पास, जब वो मंत्री थे सेंटर में। आप वहां पर वापस से देखेंगे, तस्वीरों को दिखवाना चाहूंगा कि यहाँ पे समर्थकों की भारी भीड़ है। शहीद स्मारक जयपुर का ये जो मैदान है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे तमाम समर्थक सचिन पायलट के यहाँ पे मौजूद हैं, अलग अलग जिले से आए हैं, अलग अलग गाँवों से, ढाणियों से आए हैं और
कॉल किया था सिर्फ धरने का, अनशन का सचिन पायलट ने। इसमें किसी भी विधायक को बुलाया नहीं था सचिन पायलट ने, सिर्फ समर्थकों के साथ धरना करना था, एक दिन का करना था। अभी 2 से ढाई घंटे का वक्त और बचा हुआ है इस प्रोटेस्ट में। सचिन पायलट को आप यहाँ पे तस्वीरों में देख रहे हैं कि वो बैठे हुए हैं, राम धुनी के साथ में बैठे हुए हैं। लगातार देशभक्ति सॉन्ग जो है वो चल रहे थे और अब यहाँ तस्वीरों को देखेंगे तो आप यहाँ भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सचिन पायलट जो हैं वो खुद यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार वो बैठ चुके हैं 2.5 से 3 घंटे और 2.5 से 3 घंटे अगले और उनको बैठना है। तो यहाँ पे समर्थकों की तादाद जो है वो लगातार बढ़ रही है। जितना अंदर है उतने ही लोग बाहर हैं। समर्थकों की तादाद से ये समझा जा सकता है कि सचिन पायलट अपना अगला कदम क्या उठाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से रंधावा का एक मैसेज रात को पब्लिश हुआ था, लोगों के बीच में आया था, उसमें साफ पहली लाइन थी कि ये पार्टी विरोधी कार्यक्रम है। यानी कि अगर सचिन पायलट इस काम को करते हैं तो पार्टी विरोधी होगा और सचिन पायलट ने ये कदम अपने घर से इसी अनशन की तरफ बढ़ा दिए। यानी कि सचिन पायलट ने आलाकमान की कोई भी बात को नहीं माना है। तो इसे समझा जा सकता है कि ये पार्टी विरोधी कार्यक्रम अगर आलाकमान मानता है तो सचिन पायलट ने उस पर मोहर लगाकर ये साबित कर दिया कि ये पार्टी का जी। Right, Amardeep, thank you for getting us all the details. Amardeep is on the spot right now. He's at the Dharna spot, the Dharna site, and two versions coming out, viewers. In one version, we are seeing that some Vadra Congress leaders are saying that what Sachin Pilot is doing, these are anti-party activities. On the other hand, we are seeing that the people, the leaders and some of the participants at the Dharna, they are saying that Pilot is holding a protest against graft under the BJP regime, and he is not targeting Congress party leaders. So there are two different versions coming out right now. This is the top story, and we'll continue getting you live visuals from Jaipur. Let's move ahead, viewers, to what we can expect later on this month. It's going to be a very big event. India's biggest news event is back. The third edition of the Republic Summit will be held in the national capital this month. The biggest names, the biggest newsmakers, and the biggest agents of change and transformation in India will be at the Republic Summit once again this year. So stand by for what will be by far India's biggest news event by miles, viewers. So that is an event that you do not want to miss. It will be broadcast live on Republic TV. And let's move ahead to the other stories we're tracking here on India's #1 news network. The Punjab police, in fact, sources have said that Amritpal's aide Papalpreet has revealed certain details regarding his role in hiding of Amritpal Singh, Varis Punjab Day chief. Meanwhile, he has also been taken to the jail there. Here's more on that. And as you can see, these visuals from Dibrugarh Airport, Papalpreet Singh, one of the close aide of Amritpal Singh, has been brought here. क्या कहेंगे अमृतपाल सिंह कहाँ पे? हाँ जी, आपसे लास्ट मुलाकात कब हुई थी? 28 को। सरेंडर करेंगे कि नहीं? अमृतपाल कहाँ में है अभी? किसकी बैकिंग मिल रही है आप लोग को? आईएसआई का हाथ है क्या? आईएसआई का सपोर्ट मिल रहा है क्या आप लोग को? आईएसआई का सपोर्ट मिल रहा है क्या? हमारा कोई आईएसआई से लिंक नहीं है। अमृतपाल सरेंडर करेगा? मेरे से उनकी बात नहीं हुई 28 के बाद। 28 तक क्या कहा था आपको? नहीं, कोई ज्यादा बात नहीं हुई। सरेंडर करेगा? So this was Papalpreet Singh speaking exclusively to Republic Media Network as he has been brought here to Dibrugarh. And viewers, many developments coming in from across the globe, and we'll get to all of them in our international wrap. Amid shockwaves over leaks of highly classified documents, White House raises concerns of additional leaks. That's one of our top stories. And Pentagon says online leaks of highly classified documents about the Ukraine war present a very serious risk to national security. Taiwan's president condemns China's military drills in the Taiwan Strait, even as Taiwanese Defense Ministry says 9 Chinese warships, 26 aircraft around the island. North Korean leader Kim Jong-un holds meeting with senior military officials, emphasis on US and South Korean joint military exercises.
Secretary of State Antony Blinken welcomes Bangladeshi Foreign Minister to Washington for bilateral talks. And viewers, North Korean leader Kim Jong-un held a military meeting with senior military officials. The meeting was focused on expanding the nation's nuclear weapons. Here's what happened. On Sunday, North Korean leader Kim Jong held a meeting with the senior military officials. The meeting was focused at making thorough preparation for any upcoming war. The meeting comes as powerful strategic measures are being carried out to expand and strengthen the war deterrent of the country. The meeting comes just a month after a similar gathering of top military officials with Kim and a series of missile launches. This time, there was more emphasis on Pyongyang's current criticism of US and South Korean joint military exercises. Pyongyang does not normally hold military exercises with other countries, but it has publicized a recent series of missile and weapon tests and continues to emphasize a nuclear capability. Even though it has not tested a nuclear device for many years. Please tell us, are you going to have friendly relations with any political party whose arm has been banned by the government of India? Yes, you committed a sin in 2018. People taught you a lesson. Are you again going to commit the same sin? And this only happens because this kind of ideology breathes inside the Gandhi Parivar environment. Don't ever forget Rahul Gandhi. When Siddiqui Kappan, a member of the band outfit, was arrested, and for 2.5 years he was not granted bail by the Sessions Court, the High Court and even the Supreme Court. Rahul Gandhi, during his visit to the state of Kerala, he decided to meet the family members of Siddiqui Kappan, giving a loud message. So what if you destroy or attempt to destroy the national integrity of our country? So what if you have links with terror outfits? The Gandhi Parivar stands firmly with such persons of dubious record. And thus, time has come to raise these questions, and we all know media is the fourth pillar of democracy. Our duty is to raise these questions on every available platform. I am sure the voice of the people will be carried forward by the media. These questions will be posed to Mr. Siddaramaiah and to Mr. D.K. Shiv Kumar. The second issue, which is again very, very relevant, is an issue everywhere this sea of chaos, corruption, deceit, lies, propaganda of the Congress party goes. Again, for the sake of petty politics for votes, they make certain promises. गारंटी है भैया, गारंटी हम देंगे गारंटी. अरे आपके गारंटी के कार्ड में धब्बे लगे हुए हैं और वही धब्बे मैं उजागर करूंगा यहां से. आप गारंटी देंगे? कांग्रेस पार्टी की केवल एक गारंटी है. गारंटी है परिवारवाद होगा, तुष्टीकरण होगा. कांग्रेस आई है, तुष्टीकरण लेके आई है. पीएफआई, एसडीपीआई का मैंने आपको बताया. अगर कांग्रेस पार्टी आई है तो वो केवल एक परिवार का हित साधने आई है. जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है. और
आज ही की बात है, सोनिया गांधी जी ने एक पत्रिका में एक आर्टिकल लिखा है, लोकतंत्र खतरे में। सोनिया गांधी जी को बताना होगा, आपके लिए आपका लोकतंत्र राहुल गांधी से शुरू होता है और गांधी परिवार से खत्म होता है। लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। सोनिया माता जी, अगर आपका बेटा राजनीति में सफल नहीं हो पाया, लोगों का विश्वास नहीं जीत पाया, तो कृपया करके ऐसी धारणा मत रखिए। ये लोकतंत्र मजबूत होगा। भारत में वो ताकत है, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व पटल पर हम दिशा दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मेरा बेटा सफल नहीं हुआ इसलिए लोकतंत्र जो है कमजोर हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी, आप गारंटी देते हैं, वादे करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी एक प्रेस वार्ता करती है तो हम इधर उधर की बात नहीं करते हैं, हम तथ्यों के साथ आते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ पहले कांग्रेस की सरकार है, 10 नवंबर 2018 राहुल गांधी की खुद की एक स्पीच है, कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो 10 दिनों में किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे। ये दावा था, ये गारंटी दी थी। असलियत ये है, कर्जा माफ नहीं हुआ। इसके बाद आज ही की खबर है, सचिन पायलट जी पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। क्या ये सत्य नहीं है? वो क्यों धरने पे बैठे हैं? Sachin Pilot is fasting. He is protesting against the Congress government in Rajasthan. And what is he saying? Sachin Pilot has made a very categorical statement yesterday that during the election in 2018 we made certain promises to the people of Rajasthan. Those remain unfulfilled. Therefore, we are not in a position to face the people of Rajasthan. ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये गारंटी दे रहे हैं कर्नाटका में। नाउ पीपल ऑफ कर्नाटका आर वेरी वाइज, दे हैव मेड द राइट चॉइसेस, दे विल अगेन मेक द राइट चॉइस, बीजेपी गवर्नमेंट विल कम टू पावर। बट द पॉइंट इज कि वो गारंटी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में काम क्यों नहीं आई? वो गारंटी कार्ड का क्या करें? यहां पे गारंटी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, I am keeping this fact before you, requesting you, beseeching you to raise this point before Mr. D.K. Shiv Kumar, also Mr. Siddaramaiah and the third empire. All right, so as elections approached in Karnataka, we are seeing a press conference there by the BJP press conference in full bound Karnataka. BJP slamming the Congress and the JDS over inaction against the PFI. All right, viewers, let's move ahead. Much more coming up on the other side. BJP confirms churn in Maharashtra politics, says picture will be clear in January 2024. 3, 2, 1, 0. Dear viewers, in a few days we are bringing to you once again the Republic Summit. And this year our theme is fittingly about how this is a time of transformation. Yes, this is a time of transformation for an India that is growing 4 times faster than the world average. It is a time of transformation for an India whose manufacturing exports grow 40% year on year on the back of COVID, while China witnesses a major loss.
This is a time of transformation, of opportunity for India that has let go of the dollar hangover, and the rupee is closer to being accepted as international currency. And nearly 60% of all digital payments are already UPI based. Isn't this the very moment to come together and think of how we can make the transformation even quicker? So please join me and join all of us at Republic TV as we bring to you the Republic Summit this year on the theme of a time of transformation. See you there. जूनियर वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं नीरज चोपड़ा। 2020 में बेस्ट वन पदक जीत लिया है भारत के थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने। दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान होते हुए आज देश अपनी आंखों के सामने देख रहा है। और कभी कभी लोग कह भी रहे हैं कि हमने सोचा नहीं था कि हम जीते जी ये देख पाएंगे। ऐसा कई लोग कहते हैं और इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, भारत के 130 करोड़ लोगों का आत्मविश्वास जो कहता है यस इट इज। Good afternoon to all our viewers. I'm Suesha Samant, and like we've been telling you, India's biggest news event that is back, the third edition of Republic Summit that will be held in the national capital at the end of this month. The biggest names, the biggest newsmakers, the biggest agents of change and transformation in India who will be at the Republic Summit once again this year. So do stand by for what will be by far India's biggest news event by miles. On that note, we'll begin with the headlines we're tracking at 2 p.m. this afternoon. Ahead of Rajasthan elections, pilot launches his most open revolt against Vadra Congress. कांग्रेस का एक कल्चर रहा है, लेकिन हाँ, राजस्थान का यह विशेष परिस्थिति का निर्माण हो गया है, इसका समाधान कुछ करना चाहिए। Rahul and Priyanka seem to side with Gehlot. Miffed Congress now attack pilot. CBI collects voice sample of titler in connection with 1984 riots investigation. कि अभी अगर वो आते हैं तो उन्हें तो त्यागपत्र देना होगा। जो भी हमारे संपर्क में है वो तो अगली लोकसभा के 2 महीने पहले ये सभी लोग BJP confirms talks with opposition leaders. Party hints at big churn in Maharashtra early next year. Supreme Court dismisses Tamil Nadu government plea, gives a go-ahead to RSS march route in state.
Financial Times yet to pull down its report despite Adani's sharp response on allegations. And the story we get you on the top of this edition, it is the most open revolt by Sachin Pilot against the Congress this time, as the former Deputy Chief Minister of Rajasthan is on a day-long dharna in Jaipur. This is to protest against Gehlot government's inaction on corruption. What this has turned out to be is a massive show of strength for Sachin Pilot. We're getting to know that Gehlot has called off all his events for the day, as Sachin Pilot is on a fast. He has refused to utter even a single word till 4 p.m. today. And Pilot's protest, that is now irking the Congress in a big way, as he is raising his voice against the inaction by the Gehlot government on corruption in Rajasthan. As we are getting inside details of the top leadership, we are also hearing that Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra are siding Gehlot on this. But Sachin Pilot now taking a strong position. Vishal Pandey is joining us live to give us more details on this. Vishal, first up, where are you joining us from? And what are the updates you're picking up on behalf of Sachin Pilot? To how far he will take this fight? And even with the leadership not really by his side at this point, how is he going to really stand his ground? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, असेंबली इलेक्शंस हैं, और ऐसे में सचिन पायलट जो हैं वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ ही अनशन पर बैठ गए हैं। इस वक्त मैं जयपुर में ही मौजूद हूं और जयपुर में शहीद स्मारक पे जो है वो सचिन पायलट अनशन पर बैठे हुए हैं और अनशन में मौन व्रत पर बैठे हुए हैं। अभी बातचीत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। 4 बजे तक उनका ये अनशन बताया जा रहा है और 4 बजे के बाद मीडिया से मुखातिब होंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे और मीडिया से बातचीत करने के दौरान जो है वो अपनी बातें रखेंगे। हालांकि उनका ये अनशन जो है ये वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ है। सचिन पायलट का ये कहना है कि अशोक गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार की जांच नहीं की, तो वो लगातार यही चाह रहे हैं कि जांच पड़ताल जो है वसुंधरा सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए थे उस पर जांच पड़ताल हो और उसकी जो है कहीं ना कहीं जांच की मांग लगातार सचिन पायलट शुरुआती दौर से ही कर रहे हैं। सचिन पायलट का यह भी कहना है कि जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे और जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो इसी बात को लेकर आई थी कि राजस्थान में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसकी जांच पड़ताल होगी और आगे से भ्रष्टाचार नहीं होंगे, लेकिन अशोक गहलोत ने जांच नहीं करवाया, ऐसा सचिन पायलट का लगातार कहना है। रिपब्लिक भारत ने बातचीत करने की कोशिश की सचिन पायलट से, लेकिन सचिन पायलट मौन व्रत पर हैं, अभी कुछ बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन 4 बजे के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि सचिन पायलट बातचीत बिल्कुल करेंगे। लेकिन जरा सोचिए कि यह कोई पहली बार नहीं है जब सचिन पायलट ऐसे प्रोटेस्ट पे या अनशन पे बैठे हों। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी राजस्थान में, तब भी जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार खुद को मानते थे सचिन पायलट, और सचिन पायलट जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे उसके बाद भी कहीं ना कहीं कांग्रेस 2 खेमों में बट गया था और सचिन पायलट अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा उस समय भी इन्होंने खोला था। उसके बाद 2020 में भी इन्होंने अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोला था और 2022 में भी ऐसी चीजें निकलकर सामने आई थी। अब 2023 चल रहा है और 2023 इस बात को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण है कि 2023 के आखिरी दिसंबर के पहले तक विधानसभा यानी असेंबली इलेक्शंस हैं राजस्थान में, और ऐसे में कहीं कांग्रेस में आपसी दरार आ गई तो क्या कांग्रेस इस पूरे अनशन का प्रभाव कांग्रेस के चुनाव पर भी जो है वो पड़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल जो स्पेशलिस्ट है उनका यही कहना है कि ये जो अनशन है इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है वो एक तरफ से थोड़ा फायदा जरूर मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस जो है अभी बिल्कुल 2 खेमे में बढ़ चुकी है। अगर आज की अनशन की बात करें तो सचिन पायलट ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था अपने तमाम नेताओं को, चाहे हम विधायकों की बात करें, सांसदों की बात करें, जो इनके खेमे के सांसद और विधायक हैं, इन्होंने मना कर दिया था कि किसी को अनशन पर नहीं आने के लिए। हालांकि फिर भी भारी तादाद में जो है यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, अलग अलग जिलों से जो है कार्यकर्ता और नेता पहुंचे हुए हैं और लगातार सचिन पायलट को जो है वो सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ही नारा लग रहा है कि सचिन पायलट तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथ साथ
बीच बीच में ये भी नारा लग रहा है कि मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। तो ये आने वाले जो चुनाव है उस पर कहीं ना कहीं इसका नतीजा पड़ सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 4 बजे के बाद सचिन पायलट अनशन तोड़ते हैं तो मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या बातचीत करते हैं। जी, बैक टू स्टूडियो। All right, we wait until 4 p.m. when Sachin Pilot actually speaks, because you're rightly pointing out, Vishal, even earlier when he's raised his voice against Gehlot, it has been understood that he may quit the Congress. Now, is that really going to be the final outcome? We don't know, because such events have happened even in the past. But what is the big picture this time around? We'll probably know post 4 p.m. And how long will he take this fight against Gehlot? We also have some voices from the Congress coming in on this. Let's listen in. But before that, I want to take the same point to our executive editor politics, Aishwarya Kapoor, who's with us on the broadcast. Aishwarya, like I'm trying to understand the big picture here, Sachin Pilot having dissented and raised his voice against Gehlot is something that has even happened in the past. Even today at that protest site, a huge show of strength for Sachin Pilot, slogans being raised in his favor, in his support. Even earlier, he tried to show that he really had cobbled up the support, and he has the numbers in his favor. But that really didn't have a positive outcome for him. Is this really about him raising his voice against Gehlot for the inaction against corruption, or is there more to it? Swesha, the fight is no more against Gehlot. The fight is against the Gandhis. The fight is against the Congress party. And Sachin Pilot is also not joining the BJP, because the way he has taken on Vasundhara Raje Scindia just around 2 days prior to this Anshan, which he's doing against Gehlot and then against the Congress party, it's very clear that he's looking to flag off his own dal. He is looking to start his own regional party, which, by the way, is already registered long time back by his father in the name of farmers. So that is already there. But what is going to be important, that is it going to be only Sachin Pilot, or are there going to be leaders from other political fractions, including the BJP and including certain stalwarts who are right now acting as independent leaders, joining Sachin Pilot in this alliance of sorts against the Congress and the BJP? But what is also very interesting to see, that according to our sources, only and only after Priyanka Gandhi Vadra directing the state in charge, who, by the way, came out with that very strong line late last night, that this Andolan, this fast, this protest of Sachin Pilot is against the Congress and is going to be termed as an anti-party activity, basically making an adequate amount of evidence preparing for his expulsion, has taken 2 steps back. And he has not even gone to Jaipur today, which he was